अंग्रेजी बोलता हूँ, किसी को ले जाइए। I don't speak English. मैं अंग्रेजी बोलता हूँ भाई, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ ना। आप कह रहे हो मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, क्यों नाराज हो क्या मुझसे? मैं कहता हूँ I मैं speak English. हाँ, I speak English. Hello, hi, good morning, ladies and gentlemen. Hello, hi, good morning, ladies and gentlemen. फोटो रहता है ना, कुछ पिक रहती है, उसको लेना पड़ता है, पिक नहीं आती है फिर। Hello, hi, good morning, ladies and gentlemen. Today I am here. ठीक, मैं पहले बोलूँगा फिर आप बोलिएगा, ठीक है? So today we are going to practice. We are going to practice how can we translate, how we can translate well, how we can transform, how we can identify, how we can restore, how we can store tenses in our mind, especially when we go anywhere to speak English, to perform, to talk, to debate, to conversation, any activity, especially in English language. So how do we use properly well sentences, especially tenses in English language? This is quite important. Many people, many students, they are facing problem, they are making mistake to apply tenses in your speech, in your debate. So how we can practice well sentence one by one, how we can store, how we can transform, how we can learn, how can you store, how we can gain, how we can achieve, how we can have full confidence, especially tenses. This is the technique philosophy. Ladies and gentlemen, we are going to give a three very authentic, powerful, special, tremendous ideas, panacea, which will help you definitely, damn sure, to promote, to speak, to translate your tenses, right? तो मैं आज आपको क्या करने जा रहा हूँ, 3 ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूँ जो टेंसेस में आपको क्या करेगी, बहुत मदद करेगी. दिस इज वेरी हेल्प यू ना, पैनासिया रहेगी, एकदम जबरदस्त तरीके से आप क्या करोगे, आप अच्छे तरीके से अप्लाई करोगे. तो ध्यान से समझिएगा, राइट माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा. टेक्निक क्या है, पहली जो टेंसेस की टेक्निक है, जो प्रैक्टिस हम करेंगे यहाँ, उसमें हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस हम आपसे बोलेंगे, आपको अभी चारों एक्शन में अप्लाई करना है. अगर हम 3 टेंस पढ़ लिए होते तो 3 टेंस में उसको अप्लाई करते, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा हम पीछे की तीनों टेंसेस हमने पढ़ा नहीं है, तो 4 एक्शन में अप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 4 4 12 हो जाता है एक्शन हमारा, तो 4 में ही करेंगे. तो ये 4 में नहीं बल्कि 12 में भी आप अप्लाई कर सकते हो. एक सेंटेंस जैसे मैंने बोला कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो आपको ट्रांसलेट क्या करना है कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, कभी मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, मैं अंग्रेजी बोला था, मैंने अंग्रेजी बोल रहा था, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ. ये सारी चीजें क्या करना, आपको ट्रांसलेट करते चले जाना. दिस इज द वेरी बेस्ट आइडिया टू alternate, to change, to interchange yourself, how you can go present indefinite, how you can convert yourself continuous, how you can convert next sentence perfect, how you can convert present perfect, how you can convert yourself, your skill, your practice, actually how you can make habit to changes yourself, continuous, perfect, continuous, each and every tenses, how you can speak easily. This is the idea we are going to tell you. Are you getting? Yes. Do you understand, my dear, what I want to tell you? Do you understand? Yes. 4 स्टेप बताएंगे, बल्कि क्या करेंगे, 4 स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे. पहला स्टेप क्या रहेगा, मैं आपसे क्या करूंगा, एक सेंटेंस हिंदी में पूछूंगा, आपको उसको चाहे कंटिन्यूअस में पूछूं चाहे इंडेफिनिट पूछूं, आपको इंडेफिनिट में बताना पड़ेगा, कंटिन्यूअस में बताना रहेगा, परफेक्ट में भी परफेक्ट, कंटिन्यूअस में भी इतना ही, क्योंकि 4 ही हम पढ़े, एक्शन पास्ट वाला नहीं पढ़े ना, फ्यूचर वाला. तो जैसे मैंने आपसे पूछा मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो आपको अक्सर आई स्पीक इंग्लिश, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 hours, like that you have to speak. This is the first step, first philosophy. Next step is that which is very important, vital to develop ourselves, especially in the tenses. This is, मैं आपसे क्या पूछूंगा, एक टेंसेस पूछूंगा, उसको क्या करना है, अच्छे तरीके से आपको बता देना है. कैसे, जैसे मैं बोलता हूँ मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो आई स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, डू आई स्पीक इंग्लिश, डोंट आई स्पीक इंग्लिश, हाउ डू आई स्पीक इंग्लिश, हाउ डोंट आई स्पीक इंग्लिश. दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द. And next is that now, this is the very important, that you can speak easily. I keep on speaking, I don't keep on speaking, do I keep on speaking English, how do I keep on speaking, how don't I keep on speaking English. इसको नहीं बोलना, दो ही बोलना. तीसरा तरीका आपको क्या यूज करना है कि आपको सब में लेके जाना है. जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो आप क्या कहोगे, सर आई स्पीक इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, I have spoken English, I have been speaking English for 2 hours. उसके बाद I don't speak English, I'm not speaking English, I haven't spoken English, I have not been speaking English for 2 hours. This is third. Next is that, this is the very important, believe me guys, could you believe me, this is my creative and innovative, authentic point, authentic step. This is the first, जो पूछूंगा वही बता देना, जो पूछूंगा वही क्या करना आपको
बता देना। दिस इज वेरी सिंपल है। चौथा क्या है? बहुत सिंपल है। सो देयर आर 4 स्टेप गाइस व्हिच आई वांट टू टेल यू कि बाय प्रैक्टिसिंग, बाय अप्लाइंग, by speaking more over and over, if you gonna encounter over and over, definitely you can have full command how you can interchange, how you can change, how you can convert from present indefinite, continuous, perfect, perfect continuous, even sentences in different assertive sentence, question type 1, question type 2, how you can practice. If you do, if you apply this kind of activity in your English language, definitely you can you can have full command in English language, right? Start करते हैं सेशन को जी। इधर देखिए, स्टार्ट करते हैं। राइट, आई कैन स्टार्ट, यू से आई कैन स्टार्ट टुडे सेशन, I gonna start टुडे सेशन ना। राइट, पहला मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। I speak English, I am speaking English, I have speaking English, I have spoken I have spoken English, I have been speaking English for 2 hours. For 2 hours, very good, excellent, जबरदस्त परफॉर्मेंस। राइट, नेक्स्ट है दूसरा स्टेप आपको बताना है। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, सेम, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। I speak English, I don't speak English, do I speak English, do I not speak English, why do I speak English, why do I not? Good, very good, जबरदस्त ना, कीप इट करेक्ट ना। I speak English, I don't speak English, do I speak English, don't I speak English, how do I speak English, how don't I speak English, this is like that, you can speak, very good, this is next। जो तीसरा है बड़ा ही टफ है लेकिन जबरदस्त है। क्या है? तीसरे में क्या करना है? सेंटेंस भी आ जाएगा, टेंसेस भी आएगा, मतलब एक्शन भी आएगा और सेंटेंसेस भी, एडजेक्टिव, समझ रहे हो ना। तीसरा आपको ऐसे बोलना है, मैं अंग्रेजी बोलता हूं तो आपको 4 में ले जाना है, लेकिन उसका नेगेटिव भी लेके जाना है। जो आपने 2 पहले किया स्टेप, उसको तीसरे में पूरा अप्लाई हो जाएगा। क्या होगा? अप्लाई कैसे हो जाएगा? मैं अंग्रेजी बोलता हूं तो आपको सर आई स्पीक इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। उसके बाद नेगेटिव इसका बनाना है, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आई हैवंट स्पोकन इंग्लिश, आई हैवंट बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। फिर उसके बाद डू आई स्पीक इंग्लिश, एम आई स्पीक इंग्लिश, हैव आई स्पोकन इंग्लिश, हैव आई बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। उसके बाद डोंट आई स्पीक इंग्लिश, एम आई नॉट स्पीक इंग्लिश, हैवंट आई स्पोकन इंग्लिश, हैवंट आई बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। No. Very simple, very common. Do you feel? Yes. हमने पहले में क्या किया था? पहला प्रेजेंट में क्या किया था? पहला एक पूछा जाता था, चारों को बनाते, चारों एक्शन बनाते थे। दूसरे में हमने क्या किया था? 1 का 6 बना डाला। क्या बना? 1 का 6 बना डाला। तीसरे में हमको क्या करना है? चारों भी ले जाना है, लेकिन चारों को 6 लेके जाना है। क्या ले जाना है? 6 ले जाना। समझ रहे हो ना? You try. I support. You try. This is the practical class and this is the practice. If you make mistake, don't worry. Don't. चलिए यहाँ try करिए। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, इसी को ले जाइए। I don't speak English. मैं अंग्रेजी बोलता हूँ भाई। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ ना, आप कह रहे हो मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, क्यों नाराज हो क्या मुझसे? मैं कहता हूँ I speak English. हाँ, I speak English. इसको ले जाइए, चारों में लेके जाना I पहले। speak English, I am speaking English, I have spoken English, I have been speaking English for 2 अब इसका hours. नेगेटिव बना दीजिए चारों, for 2 hours। सही, बिल्कुल सही। I don't speak English, I don't speak English, I am not speaking English, I haven't spoken English, good, I haven't been speaking English for 2 hours, very good, जबरदस्त। Next, do I speak English? Do I speak English? Do I हाँ, not थोड़ा speak देर। Do I speak English? Do I speak English? Am I speaking English? Am I speaking English? Have I spoken English? Have I spoken English? Have I not been speaking English? Have I been speaking English for 2 hours? उसके बाद don't I speak English? Don't I speak English? Am I not speaking English? Am I not? Haven't I spoken English? Haven't I not spoken English? Haven't I been speaking English for 2 hours? Haven't I been speaking? How do I speak English? How do I speak? How may I speak English? How may I speak English? How have I spoken English? How how- have I spoken English? How have I been speaking English for 2 hours? How have I been speaking English for 2 hours? How don't I speak English? How don't I speak English? How am I not speaking English? How haven't I spoken English? I spoken How haven't How haven't I been I've been speaking English for 2 hours? Very good, जबरदस्त। Keep your hands right. जबरदस्त। Do you feel something? Next is very simple. Very simple, जो पूछूं वही बता देना है। जी, आप कहाँ रहती हो? आप कहाँ रहते? ट्रांसलेट करना है। Where do you live? Where are you? Where do you live? Where do you मैं आपको जानता हूँ, I know you. लेकिन अच्छे तरीके से नहीं जानता हूँ। But But I don't know But properly. I don't know. I don't know properly. मैं आपको पसंद करता हूँ। I like you. I like you. I like you. तुम यहाँ अंग्रेजी सीखती हो। You are. You learn English here. मैं स्कूल जा रहा हूँ। I go to. तुम कहाँ जा रही हो? Where are you going? तुम क्यों वहाँ जा रही हो? Why? कौन बुला रहा है? कौन बुला रहा है? Who is calling? Who is calling? Who is calling? You. क्या आपने ताजमहल देखा है? Have you seen ताजमहल? Have you seen Taj Mahal? Have you seen Taj Mahal? मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। I don't like. I don't lie. Good. मैं हमेशा सच बोलता हूँ। Always speak I English. always
I always speak English. मैं मेहनत करता हूँ. I do hard work. I practice. थोड़ा सा और जान लगा के सेंटेंस बोलना है. I practice. I practice. मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ. I want to speak English. मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ. I want to speak मैं English. कुछ नया करना चाहता हूँ. I want to do something new. I want to do मैं अपने आप को चेंज करना चाहता हूँ. I'm changed. Raise your hands. मैं अपने आप को चेंज करना चाहता हूँ. I am changed to myself. हाँ, I want to change myself. मैं अपने आप को मजबूत बनाना चाहता हूँ. I want to make strong myself. मैं स्मार्ट बनना चाहता हूँ. I I want to become smart. I want to become a smart. I want to become a Smart. मैं जबरदस्त पब्लिक स्पीकर बनना चाहता हूँ. I want to become a tremendous या wonderful public speaker. मैं इसीलिए यहाँ आता हूँ. इसलिए यहाँ आती हूँ. That's why I come here. That's why I come here. मैं अंग्रेजी सीखता हूँ. I learn English. मैं try करता हूँ अच्छी अंग्रेजी बोलने की. I try to speak English. हाँ, I try to speak English fluently, confidently. This is activity I do. अब जितना सेंटेंस लास्ट में मन क्या आप बोल दो. Present indefinite continuous perfect. 100, 200, 100, 10, 20 जितना आप बोल सकते हो शमा. Right? Whatever you have ability capacity, actually you will speak. I speak, I learn, I know, I don't know, I come here, I start, I am coming, I am going, I am doing, I am run, I am liking too many activity. Please tell me. Start, speak. Tenses आपको बोलना है. Sentences only. ऐसा लगे speech बोल रही हो आप. This is the fifth step. बोलिए कुछ भी बोलिए सेंटेंसेस आपको अपनी मर्जी से बोलना है. I come here, I learn English, I try to speak English, I don't know you, I try to speak, I never tell a lie, I always speak truth, I come here, I eat the food, I know I am coming, people are going, you are coming, I am debating, I am talking to you, I am debating, I try to sit here, I try to waste time here, I try my time, like that you have to speak many sentences. You can do? No? Okay, very good, sit down. Next.